Well, children, very good afternoon. This is L.K. Tripathi, your SST teacher from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. My dear children, we have been studying History Chapter 2. In previous discussion, we have seen many ups and downs in the Indian society created by the British. That was very exploitative policy by them. In this sequence, we have a new video related to the same chapter, that is the Battle of Plassey. This was a turning point in the history of India, which strengthened the British East India Company in India. This battle was a remarkable battle which changed the total history of India. So, before starting, let's discuss something about that. अब हम देखते हैं कॉलोनाइजेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का कॉलोनाइजेशन कैसे होता है। जो बहुत सारे इंडिपेंडेंट किंगडम्स के रूलर्स रहे वो मुग़ल एम्पायर के बाद धीरे धीरे अलग होते गए एंड दे वांटेड टू शो देयर ओन सुप्रीमेसी एंड ट्राई टू इस्टेब्लिश देयर ओन पावर एंड इंटरेस्ट। ग्रेजुअली they were isolated from the Mughal courts and Mughal rulers, those who were those days in India. As a result, to show the power and establish their own power, a conflict emerged between the Indian rulers who had occupied small territories of the country. So, in 1756, हम देखते हैं 1756 में Ali Vardi Khan, who was the Nawab of Bengal, and he was succeeded by his maternal grandson Siraj-ud-Dawla. He tried to check the EIC's bid to extend the fortification of Calcutta and get the treasury the company had accumulated from the Bengal treasury. At Dhaka, besides, he refused to give more trade concession and privileges to the EIC. As a result, Siraj-ud-Dawla overthrown him. When Siraj-ud-Dawla learned about it, he marched with his soldiers to the EIC's Qasim Bazar factory and captured it. He also captured the EIC's Calcutta headquarters and compelled the officials to surrender. When he understood that he is being deceived by his own and reliable officials of the court, he marched to the Qasim Bazar, captured factories, captured Calcutta headquarters and compelled the British officers and the local nobles and officers to surrender before him. So what happened after that? The Battle of Plassey. As a result, the Battle of Plassey took place there when Ali Vardi Khan died in 1756. Siraj-ud-Dawla became the Nawab of Bengal. The company was worried about his power and keen on a puppet ruler who would willingly give trade concession and other privileges. When Ali Vardi Khan died in 1756, Siraj-ud-Dawla occupied the throne of Bengal. He captured, and seeing this condition, company became worried about the power because company wanted to keep the puppet. Puppet means ऐसे पिजड़े का तोता हो जो उसके अनुसार as they will to rule over the country he should do, कि जैसा वो चाहें, जैसे देश को चलाना चाहें, स्टेट को चलाना चाहें, उस तरह का जो है राजा चाहिए जो इशारे पर घूमता हो. So it tried, though without success, to help one of Siraj-ud-Dawla's rivals become the Nawab. And infuriated
Sirajuddaulah asked the company to stop meddling in the political affairs of the Dominion. ये सारी चीज़ें जो पहले से अली वर्दी खान के समय में थी, सिराजुद्दौला इसको बंद करना चाहा और उसने सख्त जो है आर्डर निकाला कि किसी भी पॉलिटिकल अफेयर्स में इस स्टेट के, इस प्रोविंस के किसी भी पॉलिटिकल अफेयर्स में दूसरा कोई दखलंदाजी नहीं करे। स्टॉप फोर्टिफिकेशन, जो किलेबंदी है, जो यहाँ पर फोर्ट्स बनाए जा रहे हैं उसको बंद करो और रेवेन्यू को पे करो। आफ्टर नेगोशिएशंस फेल्ड, द नवाब मार्च विथ 30,000 सोल्जर्स टू द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार, कैप्चर द कंपनी ऑफिसर्स। दिस नेगोशिएशन वाज फेल्ड। ये बातचीत फेल हो गई। नवाब 30,000 सैनिकों के साथ कासिम बाजार की तरफ जाता है और वहाँ पर बाजार को कैप्चर करता है, फैक्ट्री को कैप्चर करता है और कंपनी के अधिकारियों को बंदी बना लेता है। लॉक्ड द वेयर हाउस, डिसआर्म ऑल इंग्लिशमैन एंड blockaded English ships. All the English things were banned, they were packed, all the activities were stopped, our mission were banned, disarmament stood there, ships को ब्लॉक कर दी गई। उसके बाद कलकत्ता की तरफ मार्च करता है सिराजुद्दौला कंपनी के फोर्ट्स और इसको कैप्चर करने के लिए। On hearing the news of the fall of Calcutta, company officials in Madras sent forces under the command of Robert Clive. All this happened made English rulers excited and they sent, seeing the condition of Calcutta, the English officials sent a troop of army to control all these things. And under the command of Robert Clive, who was the Governor General, a troop marched from there, reinforced by naval fleets. Naval fleets से वहाँ से सब चले। Prolonged negotiation with the Nawab followed. Finally, in 1757, Robert Clive led the company's army against सिराजुद्दौला at Plassey. अंत में क्या होता है कि कोई निगोशिएशन नहीं बनता है, बात फेल हो जाती है और 1757 में फाइनली रॉबर्ट क्लाइव के लीडरशिप में कंपनी ने जो है अपनी आर्मी उतार दी और सिराजुद्दौला से प्लासी के मैदान में युद्ध छिड़ गया। वन ऑफ द मेन रीजन्स फॉर द डिफीट ऑफ द नवाब वाज दैट द फोर्सेस लेड बाय मीर जाफर, दिस वाज a big mistake and deceit with the Nawab. The army of Nawab was marching and fighting under Mir Jafar, who was informer of the British, who was in the favor of British East India. One of Sirajuddaulla's commanders never fought the battle. कभी इसने युद्ध नहीं लड़ा। क्लाइव हैड मैनेज टू सिक्योर हिज सपोर्ट बाय प्रॉमिसिंग टू मेक हिम नवाब आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला। एंड क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, हु वाज ए वेरी shrewd and clever, just he took him in his favor and greeted him, promised him to appoint him as a Nawab of Bengal after Sirajuddaulla's defeat. आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला, उसने लालच दिया मीर जाफर को कि हम तुमको नवाब बना देंगे। द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस बिकॉज इट वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी वन इन इंडिया। इस तरह से जो है सिराजुद्दौला 1757 में हार गए और ब्रिटिश ने इसको जो है कैप्चर कर लिया। This was a great achievement of the British as capturing Bengal. After the defeat at Plassey,
Sirajuddaulah was assassinated and Mir Jafar made the Nawab. मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया, सिराजुद्दौला हार गए. The company was still unwilling to take over the responsibility of administration. Its prime objective was the expansion of trade. ये एडमिनिस्ट्रेशन को जो है लेने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले नहीं थे. इनका मुख्य उद्देश्य था कि अपने ट्रेड को हम बढ़ाएं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसमें उनको बहुत ही मुनाफा, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था. If this could be done without conquest, through the help of local rulers who were willing to grant privileges, then territories need not be taken over directly. तो जो भी टेरिटरीज़ हैं उनको डायरेक्टली अपने अंडर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है कि तो हम बिना लड़ाई के ही भारत पर अपना कब्जा कर लेंगे. जो लोकल रूलर्स हैं वो क्या चाहते हैं? प्रिविलेजेस चाहते हैं. वो अपना एकाधिकार चाहते हैं, विशेषाधिकार चाहते हैं, जो हम उनको दे करके उन्हीं से शासन करवाएंगे और अपने रेवेन्यू कलेक्शन में लगे रहें. Soon the company discovered that this was rather difficult, for even the puppet Nawabs were not always as helpful as the company wanted them to be. After all, they had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from their subjects. What could the company do? When Mir Jafar protested, the company deposed him and installed Mir Qasim in his place. अब मीर जाफ़र को हटा करके कंपनी ने मीर कासिम को वहाँ पर अपॉइंट कर दिया बंगाल में. जब मीर कासिम ने जो है कंप्लेंट किया तो बक्सर का जो है युद्ध इसके खिलाफ में शुरू हुआ और उसमें मीर कासिम हार जाता है और बंगाल से बाहर उसको फेंक दिया जाता है. मीर जाफ़र को रीइंस्टेट किया जाता है, रीइंस्टॉल किया जाता है. फिर से मीर जाफ़र को यहाँ का नवाब बनाया जाता है और उस नवाब को 5 लाख हर मंथ जो है उसको पे करना होता था रेवेन्यू. लेकिन बट द कंपनी वांटेड मोर मनी टू फाइनेंस इट्स वार. लेकिन नवाब ने कहा कि 5 लाख मंथली हम आपको पे करेंगे, लेकिन कंपनी इससे ज़्यादा पैसे चाहती थी जो युद्ध में जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसको खर्च कर सकें. एंड मेड द डिमांड्स ऑफ ट्रेड एंड इट्स अदर एक्सपेंसेस. और इस पैसे से जो है अपने व्यापार में और अन्य खर्चे में को जोड़ सके. इट वांटेड मोर टेरिटरीज and more revenue. By the time Mir Jafar died in 1765, the mood of the company had changed. समय के साथ मीर जाफ़र जो है उसकी डेथ हो जाती है 1765 में और इस तरह से कंपनी का मूड चेंज हो जाता है. Having failed to work with puppet Nawab, Clive declared, We must indeed become नवाब ourselves. और इन मेयर पपेट्स को अपॉइंट करते करते ये कंपनी ने सोचा कि ये अच्छा नहीं है और उस समय रॉबर्ट क्लाइव ने डिक्लेयर किया कि हम खुद ही वास्तव में हम खुद ही जो है नवाब होंगे यहाँ के. फाइनली इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल. अब मुगल जो राजा था उसने जो है बंगाल के प्रोविंस में कंपनी को अपना दीवान घोषित किया. द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज द वेस्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज
ऑफ बंगाल। और ये जो दीवानी थी, चूँकि अंग्रेज़ यहाँ के दीवान हो गए थे और कंपनी को इसने अलाउ किया कि ज़्यादा से ज़्यादा बंगाल के रिसोर्सेज को बंगाल में ऐसे रिसोर्सेज को तैयार करो जो रेवेन्यू के लिए अच्छा हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट कर सकें। दिस सॉल्व ए मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड। From the early 18th century, its trade with India had expanded, but it had to buy most of the goods in India with gold and silver imported from Britain. This was because at this time Britain had no goods to sell in India. The outflow of gold from Britain slowed after the Battle of Plassey and entirely stopped after the assumption of Diwani. Now revenues from India could finance company expenses. These revenues could be used to purchase cotton and silk textiles in India, maintain company troops, and meet the cost of building the company fort and offices at Calcutta. Company officers become Nawabs. What did it mean to be Nawabs? It meant, of course, that the company acquired more power and authority, but it also meant something else. Each company servant began to have visions of living like Nawabs. After the Battle of Plassey, the actual Nawabs of Bengal were forced to give land and vast sums of money as personal gifts to company officials. Robert Clive himself amassed a fortune in India. He had come to Madras from England in 1743 at the age of 15. When in 1767 he left India, his Indian fortune was worth $401.102 interestingly. बताइए, when he was appointed Governor of Bengal in 1764, he was asked to remove corruption in company administration, but he was himself cross-examined in 1772 by the British Parliament, which was suspicious of his vast wealth. Although he was acquitted, he committed suicide in 1774. However, not all company officials succeeded in making money like Clive. Many died an early death in India due to disease and war, and it would not be right to regard all of them as corrupt and dishonest. Many of them came from humble backgrounds, and their uppermost desire was to earn enough in India, return to Britain, and lead a comfortable life. Those who managed to return with wealth led flashy lives and flaunted their riches. They were called Nabobs, an anglicized version of the Indian word Nawab. They were often seen as upstarts and social climbers in British society and were ridiculed or made fun of in plays and cartoons. So, in this way, we have discussed about chapter 2 up to here. We have
come to know about different types of events and happening about the Indian history. Rest we shall discuss in the next video. Thank you.